Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and Assalamu alaikum everyone. Me Farhanwar, your science teacher. I'm going to start our new chapter, Microorganism, Health and Diseases. This chapter is present in page number 11 to 20 and this is your science book. Okay my dear? So today objective is students able to learn a balanced diet is healthy for good health. There are ways to preserve food to keep it clear from germs. There are many ways of keeping healthy. Some diseases are caused by microorganisms. Some microorganisms are useful for us. And diseases are spread in number of ways but can also be controlled. Okay? So first, let's review of the previous class. What is the balanced diet and what are the importance of the food groups and what is microorganism? Kinds of microorganism, and these all are the kinds of the microorganism, that is the virus, bacteria, fungi and protozoa. What is the balanced diet? A diet which has the right quantity in the right amount, that is called the balanced diet. And what is the importance of food groups? If we say that the food pyramid, how much should we eat of different kinds of the food? And how do we know if the food we are eating are good for us? And how much of the eat kind of food should we eat? The food pyramid is a guide to help us to answer these questions. To make it simple for us, the food pyramid is arranged into the different kinds of food. We commonly eat the grains, vegetables, fruits, meats and beans, milk, yogurt and cheese, fats, oil and sweets. Students, it's sure that not all foods are equally healthy. We should eat less of some foods and more of others. Okay? Now the different kinds of the microorganism is virus, bacteria, fungi and protozoa. Now the microorganism and the diseases. Okay, if we talk about the virus, what is the virus and which type of the disease is caused by the virus? Virus are the smaller than the bacteria, and the virus can grow and survive only when they are in the living cells of organism. Students, virus multiply rapidly in the warm and the moist places. They are harmful to animals and plants and can cause many diseases. Virus spread the different type of the illness, just like the influenza, chickenpox, cold, measles, and hepatitis. Now, what is the bacteria? The bacteria is also a microorganism, and it is a unicellular organism. They grow and multiply rapidly. Bacteria cells exist in the three basic shapes, just like the oval shape, spiral shape, and rod shape. They can cause illness like the typhoid, meningitis, and the pneumonia. Students say not all bacteria are harmful. Some of them are very useful for humans and other animals and the plants. We enjoy eating yogurt, cheese, and butter. These all are prepared by using the bacteria. Some bacteria live in our body and helps in the digestion of our food. Okay. Now, what is the fungi? Um, some fungi are unicellular and some are multicellular. They, they can be the microscopic and macroscopic. The fungi includes a vast variety of the organisms such as the mushroom, yeast and the molds. They can't make their own food and obtain their food from other organisms on which they grow. Okay, we must have been green mold growing on the stale bread and the rotting fruits. Okay, WT के ऊपर जो आपको green चीज़ें खराब हो जाती है, that is called the fungi.
ओके। और समटाइम कुछ वेजिटेबल जैसे लेमन है वो ख़राब हो जाता है तो हम कहते हैं कि इसको फंगस हो गया। ओके। So the fungi like the mushrooms are eatable, but some are the poisonous and should not be eaten. And what is the protozoa? The last one is the protozoa. It is also a microorganism, and it is a unicellular organism, rather like the bacteria. If they enter the body, they can live and grow. They grow in a moist places and are commonly found in water. Dysentery is caused by the protozoa and so in the diarrhea. Okay, my dear. So, microorganism and diseases. What is the relation between the microorganism and the diseases? Microorganism से बीमारियां कैसे फैलती हैं? Deficiency diseases. The some diseases are caused when the body doesn't get the correct supply of the minerals and vitamins that is it need. These all are called deficiency diseases. अगर हम अपने खाने में प्रॉपर मिनरल्स, विटामिन्स और प्रोटीन्स नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ये डेफिशिएंसी डिजीजेस पैदा हो जाती हैं और ये हमें बीमार कर देती हैं. दे दे आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ये वो बीमारी होती हैं, ये वो बीमारियां होती हैं जो एक इंसान से, एक पर्सन से दूसरे इंसान को नहीं होती, बल्कि ये हमारे अंदर डेफिशिएंसी से पैदा होती हैं. अगर हम प्रॉपर बैलेंस मील नहीं लेंगे जो कि मिनरल्स, डिफरेंट मिनरल्स हों, उसके अंदर विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, तो ये डिजीज़ पैदा हो जाती हैं जिसको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ भी कहते हैं. Just like the different types of the vitamins you can and minerals you can see on your screen. Vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, B5, B15, vitamin D, vitamin C, vitamin A. So different types of the vitamins and the minerals we should add in our food. Non-communicable diseases and communicable diseases. What are the difference between the non-communicable diseases and communicable diseases? Some diseases are caused because a part of a body stops working properly. They affect the liver, heart, kidney and the other organ of the body. This is also the deficiency diseases. This is also called the deficiency of the diseases, and they affect our organs of the body parts like the liver, heart, kidney, and they stop their working properly. And the second is the communicable or the infectious diseases. They spread from person to person. ये एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती हैं ये बीमारियां और दे आर कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी. जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं सो द कम्युनिकेबल डिजीजेस या इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज्ड होती हैं. You can see the different types of the communicable and the non-communicable disease. Just like if you see in this picture, you can see the different type of the virus of the bacteria, and in this picture the non-communicable diseases they affect the different type of the organs. How the microorganism enter the body. Students, when we breathe, जब हम सांस लेते हैं, eat or drink, microorganism can enter the body through the nose and mouth. Of course, when we eat or drink, the microorganism can enter the body through the nose and mouth. When the infected person cough और sneeze, जब भी कोई infected person जो कि बीमार है, जिसको खांसी हो रही है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, छींकें आ रही हैं, the microorganism can enter the body. Microorganism body के अंदर enter हो सकता है. We can get the infected by the direct contact when they enter the body through cuts in the skin. Yes, if we have any cut off in the skin, we can get the infected by the direct contact. Okay. Some microorganisms like insects pass on harmful germs by biting humans and by feeding their blood.
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट्स के ज़रिए जैसे मॉस्किटो के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो सकते हैं। कैसे? जब वो स्किन के ऊपर वो इंसेक्ट्स काटते हैं तो वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है और डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीजेज स्प्रेड करता है, जस्ट लाइक द मलेरिया, डेंगू. Some diseases can also be passed through the infected food and the water. Of course, the some diseases can also be passed through the infected foods. अगर हमारा फूड हाइजीन नहीं है, हमारा फूड बैलेंस नहीं है, वॉश नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं है, या पानी जो हम पी रहे हैं वो साफ़ सुथरा नहीं है, इन्फेक्टेड है, तो हमारे बॉडी में ये भी पानी और खुराक के ज़रिए दाखिल हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बॉडी को बीमार कर सकते हैं, सिक कर सकते हैं. Infections can be caused by the different type of the worms. Different type of the worms के ज़रिए भी infection हमारे अंदर cause हो सकता है. You can see in the picture on your screen, in the picture number 1, here is a boy and he is infected in the coughing. अगर हम मुंह पे कपड़ा ना रखें, रुमाल ना रखें और कोई हमारे पास पर्सन छींक रहा है, खांस रहा है, तो ये जरासीम हमारे बॉडी के अंदर माउथ एंड नोज के ज़रिए एंटर हो सकते हैं. सो पर्सन टू पर्सन ये डिजीज़ फैल सकती हैं. दिस इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिजीज़. अगर हम ख़राब पानी पी रहे हैं, साफ़ पानी नहीं है, तो ये भी हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी के ज़रिए बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज़ पैदा कर सकते हैं और हमारे पेट में दर्द हो जाता है. यहाँ पर आप देख रहे हैं, here is the mosquito and when the mosquito bites on the human skins, the malaria and the different type of the diseases like the dengue are spread. और यहाँ पर अगर हमारे जो भी हम खाते हैं वो अनकवर्ड है, ढका हुआ नहीं है, तो इसके ऊपर फ्लाइज बैठती हैं, मक्खियाँ बैठती हैं और गंदगी फैलाती हैं. और जब इसकी खुराक को जब हम खाते हैं तो क्या होता है? बीमारियाँ फैलती हैं और हमें इन्फेक्शन हो जाता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इफ़ यू वेयर अ मास्क और हमारे पास कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो तो हम इससे महफूज रह सकते हैं बीमारियों फैलने से. ठीक है? Germs in food. You can see the different type of the fruit, vegetables in this picture. ये देखने में बहुत साफ सुथरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर इनको वॉश ना किया जाए खाने से पहले तो हम देख सकते हैं मैग्नीफाइड ग्लास के ज़रिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ द वायरस और द बैक्टीरिया नज़र आ रहे हैं. और ये बज़ाहिर साफ सुथरे नज़र आने वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारी बॉडी के अंदर इस जरासीम को दाखिल कर देते हैं जो कि मुख्तलिफ डिजीज़ को फैलाते हैं. ओके, सो जर्म्स इन द फूड यू कैन सी ऑन इन दिस स्क्रीन. Eating unwashed, spoiled food or uncovered food is one of the main way germs get in our body. अगर हम जो चीज़ खाते हैं, जो भी फ्रूट, जो भी वेजिटेबल्स खाते हैं, वो प्रॉपर वॉश ना हो या चीज़ें ख़राब हुई हो और उसको हम खा लें या अनकवर्ड हो. यू कैन सी इन दिस पिक्चर अनकवर्ड फूड. तो क्या होता है? दिस इज़ द मैनी वेज द जर्म्स गेट इनटू आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स दाखिल हो सकते हैं. मेथड ऑफ प्रिजर्व फूड. The process, what is the definition of the method of preserve food? By keeping food frozen or dry. First method is by keeping food frozen and dry. आपने सुना होगा, आप लोग जब फ्रोज़न पराठे लेकर आते हैं बाज़ार से, मार्ट से, आप नगेट्स लेकर आते हैं, कबाब्स लेकर आते हैं एंड डिफरेंट टाइप के अदर आइटम्स जो है वो आप लेकर आते हैं और उसको आप कहते हैं फ्रोज़न फूड है या वो ड्राई फूड है. सो इट इज़ द वन इज़ द मेथड ऑफ द प्रिजर्व. ये प्रिजर्व किए हुए फूड की एक टाइप होती है एंड वी कैन कीप आवर फूड प्रिजर्व बाय द फ्रोज़न एंड ड्राई. एंड थ्रू द स्टरलाइजेशन. बहुत ज़्यादा हीट पर जो चीज़ें गर्म की जाती हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा हीट गुजारने के बाद
चीज़ें के अंदर मौजूद या फूड के अंदर या उस बर्तनों के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं. सो दिस इज़ द वन ऑफ द वन अनदर method to preserve our food. एंड द थर्ड इज बाय प्रॉपर कवरिंग ऑफ फूड. ऑफकोर्सली अगर हम अपने फूड को प्रॉपर कवर करेंगे, ढक कर रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे तो हम अपने खानों को महफूज रख सकते हैं. लेकिन अगर हम अपने खानों को नहीं अगर हम अपने खानों को नहीं ढकेंगे, खुला छोड़ देंगे तो डिफरेंट टाइप के जो जर्म्स हैं वो उसके अंदर अटैक करेंगे. और जब हम इसी खाने को जब हम खा लेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर डिफरेंट टाइप के जर्म्स अटैक करेंगे और हम खुदा न खास्ता डिफरेंट डिजीज़ में मुब्तला हो सकते हैं. प्रोसेस्ड फूड, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो फूड्स हैं वो आपके कैन फॉर्म में होते हैं, टिन फॉर्म में होते हैं. ये एक प्रोसीजर के ज़रिए महफूज किया जाता है टिन में, कैन में, प्लास्टिक बैग्स में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोसेस्ड फूड्स यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव. अगर किसी भी चीज़ की खाने चीज़ के अंदर एक केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाए फॉर द प्रिजर्व फूड, फॉर द स्टोर फूड, दैट इज कॉल्ड द केमिकल प्रिजर्वेटिव. ओके, सो थ्रू द पेस्चराइजेशन. व्हाट इज द पेस्चराइजेशन? ये एक साइंसदान थे लुइस पास्टर. उन्होंने एक प्रोसीजर, एक तरीक़ेकार निकाला था, दैट इज कॉल्ड द पेस्चराइजेशन. और इसकी डिटेल हम इस तरह पढ़ते हैं. द प्रोसेस ऑफ द हीटिंग मिल्क टू 60 डिग्री और 100 डिग्री एंड देन कूल क्विकली to destroy the germs in it and make it last for longer. वो प्रोसेस जिसमें दूध को 60 और 100 डिग्री तक बहुत तेज गर्म किया जाए. एंड यू कैन सी इन द पिक्चर, यस, और फिर इसको बहुत ज़्यादा कूल किया जाए. सो मोस्ट ऑफ द जर्म्स आर किल्ड ऑफ इन दिस प्रोसेस. तो हम दूध को बहुत देर तक महफूज रख सकते हैं इस टेट्रा पैक के अंदर. एंड बहुत सारे जर्म्स इसके अंदर ख़त्म हो जाते हैं, किल्ड ऑफ हो जाते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड द पेस्चराइजेशन प्रोसेस. हाउ वी शुड कीप आवर सेल्फ क्लीन एंड हेल्दी. These all the ways we control the spread of the diseases. And what we do, we have to do the ventilize the house well. हवादार हमारा घर होना चाहिए, बहुत वेंटिलाइज होना चाहिए. कीप वाटर एंड फूड वेल कवर्ड एंड क्लीन. ऑफ कोर्स बेटा, हमें अपने पानी को, अपने खाने को बिल्कुल कवर्ड और साफ सुथरा रखना है. बॉइल्ड मिल्क, दूध को, पानी को बहुत अच्छी तरह बॉईल करके पीना है. कीप द सराउंडिंग क्लीन. सफाई के बारे में आपको पता है, जब तक हम चीज़ों को साफ सुथरा नहीं रखेंगे हम अपने आप को सेहतमंद नहीं रख सकते. बाय यूजिंग द डिसइंफेक्टेंट. डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं बेटा? जस्ट लाइक द आपके घर में यूज होता है फिनाइल है, डिटॉल है, इट इज़ कॉल्ड द डिसइंफेक्टेंट. ये बहुत सारी जो इन्फेक्शन बीमारियां फैलाने वाले जर्म्स होते हैं इनको ये ख़त्म कर देते हैं. जब हम सफाई सुथराई में इस डिसइंफेक्टेंट को यूज़ करते हैं तो जर्म्स हमारे घर से ख़त्म हो जाते हैं. इफ़ यू आर सिक, अगर आप बीमार हैं, डोंट शेयर योर पर्सनल थिंग्स. अपनी पर्सनल चीज़ों को बिल्कुल भी यूज़ ना करें. जस्ट लाइक द हैंडर चीज, जस्ट लाइक योर टॉवल, जस्ट लाइक योर क्लोथ्स. ओके, गेट आवर सेल्फ वैक्सीनेटेड. हमें अपने आप को वैक्सीनेटेड करना है. डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ है, जस्ट लाइक द मलेरिया, टाइफाइड, hepatitis, and of course the coronavirus. So we get ourselves must vaccinated. Now it's time to a homework task. It is the independent work. Book work is the independent work. Number one question is choose the correct answer, and this question is present in the page number 18. Do question number 2, fill in the blanks, page number 18. Do question number 3, tick and cross, page number 18. And now it is a copy work, short question answer. What is pasteurization? Question number 1 is, what is pasteurization? Question number 2, what are the main kinds of the microorganism? And the answer present in the page number 12, 13, 14 or see the slides.
Define the following terms: microorganism and microscope. Name any 3 places where you can find bacteria. And question number 5. How are the fungi useful for human beings? Give 2 examples. Question number 6. In what ways are diseases spread from person to person? Okay. Now this is the descriptive question answer. Question number 1. List 6 ways in which microorganism can enter in our body. Question number 2. How can we stop diseases from spreading? This answer present in page number 16 to 17. So students, thank you very much. Eat healthy food and stay healthy. Allah Hafiz.